Good morning students and welcome to our e-learning session, and today we are on lecture number 3 for chapter number 9, that is the freedom movement of 1857. One of the important concept and the topic what we are discussing for class 8, 1857 का विप्लव. One of the beautiful, interesting and the important concept that what we are discussing. As in Sem 1, we have talked about how the foreigners came to our country. Who were they? Why they came to our country? Then the first important date or the turning point in our history of India, 1757, that is a battle of Plassey, Sirajud-Dowlah and Britisher. Yes, so how Britisher won that battle of Plassey, how they got the tax collection, power of the tax collection and so on. So they came in real sense, we can say that Britisher came in the power in real sense in 1757. After that we are talking about 1857, matlab almost 100 years of the span when Britisher rule on us. Yes, and we know we got independence in 1947, so almost 190 years they rule on us. Britisher rule on us. Now we know they applied number of different policies. The basic policy was divide and rule. As we do not have the unity among ourselves, and that was our loophole, that was our drawback, and they took this advantage and they rule on us. So number of point what we have discussed in previous lecture, and today we will going to talk about the recap. We will take fast revision what we have discussed. Reasons also we will going to discuss again, and the planning of revolt, and especially what we are going to talk is about the Mangal Pandey. मंगल पांडे को आजादी की लड़ाई का पहला शहीद माना जाता है. So this all point we will going to talk. So before we talk about the planning of the revolt and about the Mangal Pandey, let's take a revision what we have discussed previously, as all the points are very important. See, nationalism emerged in India due not only the arrival of the European, but also their behavior and policies. Yes, so an important event happened in India in the year of 1857. Turning point or the first freedom struggle of our country what we can consider. So which become the first in the factor of responsible for consolidating the sentiment of the nationalism in our country. As Britisher applied different policies which are injustice towards the Indians. Okay, and because of these policies, now the sentiments and the nationalism, feeling of the nationalism emerged. So if we talk about the reasons, so reasons for the outbreak of the revolt of 1857. What was the reason? So the main reason for the revolt of 1857 was the widespread dissatisfaction among the people in India due to the suppressive policies of the British adopted to the spread their empire in India. So first of all we should understand over here what was the reason. अंग्रेजों के खिलाफ लोग क्यों गए? What was the reason? So main reason for the revolt of 1857 was the widespread dissatisfaction, as now Indians were not satisfied with the policies what they were applying. So what the widespread dissatisfaction among the people in India due to the suppressive policies of the British adopted to the spread their empire. Now if we talk about the few reasons, so the main reason was the social and religious reasons. See, the policy of social reforms by the company, as we know, they banned the child marriage, they stopped the sati pratha and so on.
So the policy of social reform, that was a good for the country, but many orthodox people felt that the Britishers are trying to convert them towards the Christianity. So the policy of social reforms by the company made the people feel insecure and suspicious. They felt that the government was trying to convert them to the Christianity and destroy the Indian culture and religion forever. People believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railway, jail and military. A larger section of our society was orthodox at the time, and thus the new changes arose dissatisfaction in India. As a result, many people joined this freedom movement to sustain their socio-religious structure. So number of people, those who are the orthodox and those who felt that the British are trying to convert them towards the Christianity, they joined this revolt. Then if we talk about the economic reason, the aim of the British was to bring the prosperity to England at the cost of India. By any mean, Britishers want to collect the wealth from our country and they want to bring the prosperity to England. So as a result, most of the section of Indian society become the impoverished. गरीब होते गए, हालत खराब हो गई. So the landlords and the peasants having lost their lands participate in this revolt. Then if we talk about the political reason, then the East India Company acquired the Diwani right, that is a right to collection the revenue as a result of their victory in the Battle of Buxar in 1764. Now students, this 3 date you should keep in mind. We are using three days, 1757 turning point, Battle of Plassey, 1764 Battle of Buxar, 1857 revolt. And then we will talk further, but at last we got independence in 1947. But this was the turning point of the history of the Indian freedom struggle, what we can say, or the starting. So the aim of the British was to bring the prosperity to the England at the cost of India. As a result, most of the section of Indian society become the impoverished, and the landlords and the peasants having lost their land participate in this revolt. If we talk about the political reason, so the East Indian Company acquired the Diwani right, that is a right to collect the revenue by the Battle of Buxar. So this followed by an aggressive policy of expansion with the help of subsidiary alliance, doctrine of lapse, then annexation and word diplomacy. So this all the policies which was applied by the Britishers. So Rani Lakshmibai, Raja Kunwar Singh of Bihar, so who were among the few of the victims of these policies, they joined this revolt. The important reason was the military reason. So the number of British officers and soldiers were very less as the vast country. See, like India, the ratio of the Indian soldier to the Britisher was 6:1. So approximately that was 6:1 in the military. The higher posts in the military were reserved for the British. ये भी हमने देखा कि soldiers जो थे most of भारतीय थे, but उनका अफसर ब्रिटिशर था. So the opportunity of promotion was very limited for the Indian soldier. There was a big difference between the salary of an Indian soldier and the British soldier. Now, the Indian foot soldier received the 7 rupee while the British soldier received the 150 rupee per month. So that was the difference between the salary of Indian soldier and the Britisher. When Indian soldier was getting 7 rupee only, at that time British soldier was getting 150 rupee per month as a salary. So the British soldier considered the Indian soldiers to be the low and insignificant. As per the religious restriction, the Indian soldiers were not allowed to cross the sea, or else the person would be treated as an outcast. Despite this custom, the Indian soldiers were compelled to cross the sea in order to fight battle for the British. Thus, like other Indians, the soldier too felt that their religion was at stake. The soldier, being part of the Indian society,
share the same sentiments of grief, suspicion and anger on the other did. Now, the immediate reason was, what was the immediate reason for the outbreak of this revolt? See, there was a various reason for the rising the anger, as economical reasons, social, religious reasons was there. But what was the immediate reason? But discontentment among the people towards the British rule. In January 1857, a new rifle, Enfield rifle, was introduced in the Indian Army, and the cartridge of this rifle had to be beaten off before being used, and this cartridge was greased with the fat of cow and pig. 1857 का विप्लव आउटब्रेक होने का इमीडिएट रीजन वाज द Alfred Enfield rifle. That was a Enfield rifle. उसका जो cartridge था, that was beaten off and that was greased in the cow and the pig fat. Now all the soldiers were the Indians, so Indian means Hindu and the Muslims. Okay, so for the Indian, cow एक holy animal है, we consider as it is a mother, and pig, so that is also like Muslim के लिए उसको हराम माना जाता है. So it is a prohibited, the meat of cow and pig is prohibited. So for the Hindus the beef मतलब cow meat, and for the Muslim the pork, that is a pig meat, was prohibited by their religion. So hence they felt that the British were deliberately trying to discantify their religion. तो हमारे सैनिकों को भी लगा कि अंग्रेज जानबूझ के उनके धर्म से उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. So immediate reason was the Enfield rifle. So hence they felt that the company, British who deliberately trying to discantify their religion, the response to their complaint in the same regard was not satisfactory. Now they complained for the same matter to the British officers, but they denied, they refused their complaint. So hence the 19th battalion of the Barakpur was the first. Now this is the important, you have to underline it, you have to mark it. So the 19th battalion of the Barakpur was the first to refuse the use of the cartridge. As a result, the entire battalion was disbanded. Sorry. तो 19 बटालियन बराकपुर की जो 19 बटालियन थी, उन्होंने सबसे पहले एनफील्ड राइफल का विरोध किया, उसका इस्तेमाल करने से मना किया, एंड द एंटायर बटालियन वाज बैंडेड. सो that was the immediate reason. In January, Enfield rifle was, in 1857, Enfield rifle was introduced. Now what was the planning, how the planning was done, and जिसको हम कहते हैं पहला शहीद, who sacrificed his life, he was the Mangal Pandey. So let's talk on the right. So it was planned to begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857. Now students, here few points we will dates specially we have to keep in mind. So it was planned that in 31st May 1857, so here the date what you will keep in mind, 31st May 1857, पूरे भारत में 31 मई को प्लान किया गया, पूरे भारत में ये डिसाइड किया गया. सी स्टूडेंट, एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द year of 1857. So of that time of India, then at that time Pakistan was also the part of our country, Bangladesh was also the part of the country. So पूरे भारत में, and that time we do not have the social media, तो सभी जो हमारे लोग थे उन्होंने डिसाइड किया हुआ था 31st मई 1857 को पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के सामने रिवॉल्ट शुरू किया जाए. नाउ सी द position. Leader like the Nana Sahib Peshwa, please underline it. In textbook we are on page number 54. See, leader like Nana Sahib Peshwa, Bahadur Shah Zafar, Kunwar Singh and the Nawab of Awadh had joined hand with the Tatya Tope. Tatya Tope was a leader
एन एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर, तात्या टोपे थे जो लीडर थे, मिलिट्री कमांडर थे, उनकी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में हु ज्वाइन, नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, नवाब ऑफ अवध. And they have joined the hand with the Tatya Tope, an efficient military commander, Rango Bapuji, an accomplished planner. Rango Bapuji जो planner थे, and the Tatya Tope who was the excellent commander, military commander. तात्या टोपे military commander थे और रंगो बापूजी जो थे, रंगो बापूजी he was the planner of this revolt, and they both were the excellent. At Azimullah Khan, a lawyer and a journalist to lead the revolt. अब रिवॉल्ट को लीड कौन करने वाला था? द लॉयर. उनका नाम क्या था? वो वकील थे. उनका नाम क्या था? अजीमुल्लाह खान. अ लॉयर एंड द जर्नलिस्ट टू लीड द रिवॉल्ट. लोटस एंड रोटी were the symbol to join the revolt for the civilian and the soldier respectively. Lotus अब देखो क्या हुआ यहां पे. सॉरी, जैसे मैंने बोला, दैट वाज द टाइम ऑफ 1857. एट दैट टाइम वी डू नॉट हैव द सोशल मीडिया एंड इट वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर. तो लोगों को कैसे पता चले या तो कौन रिवॉल्ट में शामिल है या नहीं है? तो उसका सिंबल, if we are playing for the Indian cricket team, then we will wear the same type of clothes, same type of uniform, t-shirt and somewhat, okay? Say, if we all are having Indian national flag, it means we are an Indian. So, the person or the group or the person who joined this revolt, so what was the symbol? How one to another, how they will come to know that he or she is in the part of this revolt. So, for the civilian, जो सिविलियन थे, आम आदमी थे, उनके लिए सिंबल क्या रखा गया था? लोटस का, कमल का. If कमल was the symbol कि he or she is a part of this revolt. And for the soldier, roti was the roti was the symbol for the participant of this revolt. See, क्योंकि अंग्रेजों से बच के छुप के ये करना था, तो कॉडवर्ड लैंग्वेज थी ये. सिविलियन जो थे उनके लिए कॉडवर्ड क्या था? लोटस का था. और जो मिलिट्री में थे, जो रिवॉल्ट में साथ देने वाले थे, उनका कॉडवर्ड था रोटी. दिस वॉज द कॉडवर्ड, एक सिंबल था, कॉडवर्ड था, जिससे अंग्रेजों को पता भी ना चले और ये लोग अपना काम कर सके. So these symbols were circulated across the nation. और सबको 31 तारीख डिसाइड हुई थी, 31 May was decided. भारत में अब उस समय टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, so पूरे देश में संदेशा पहुंचाने में देर लग गई थी. But the message was that the person, civilian who were interested for this revolt, who wants to join this revolt, codeword था lotus, and for the soldiers the codeword was the roti. See, and lotus and the roti were the symbol to join the revolt for the civilian and the soldiers respectively. The symbol were circulated across the nation. Bards, Hindu, Muslim, priest, Aulias and messenger play their part in spreading the word about the revolts. अब ये संदेशा पहुंचाने का काम किन्होंने किया? अब पूरे भारत में लोगों को ये संदेशा पहुंचाना था. 31 तारीख 1857 को हम अंग्रेजों के खिलाफ एक रिवॉल्ट शुरू कर रहे हैं. तो ये मैसेज कैसे स्प्रेड किया गया? औलिया थे, फकीर थे, पुजारी थे, मौलवी थे, जो लोग के सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते थे उस समय, दे वर्क फॉर दिस, दे वर्क फॉर द नेशन. उन्होंने पूरे देश में मैसेज पहुंचाने का काम इन लोगों को दिया गया. सो द बार्ड्स, द हिंदू एंड द मुस्लिम प्रीस्ट, ऑलियास एंड मैसेंजर्स प्ले देयर पार्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द रिवॉल्ट.
Now Mangal Pandey opposed the use of the cottage grease with the fat of the cow and pig. Now Mangal Pandey जो थे वो ब्रिटिश सोल्जर थे. He was a soldier in British Army. When Enfield rifle introduced to them, so Mangal Pandey refused to use it. मंगल पांडे ब्रिटिश सोल्जर थे, वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, पर उन्होंने एनफील्ड राइफल, एज इट वॉज द कार्टेज वॉज द ग्रीस इन द काउ एंड पिग फैट, सो he refused to use this cartridge. So the Mangal Pandey opposed the use of the cartridge grease with the fat of cow and pig. As a result, the revolt began earlier than the fixed date. अब 31 तारीख डिसाइड हुई थी, 31 May was decided, बट मंगल पांडे की टीम और मंगल पांडे ने सबसे पहले एनफील्ड राइफल के कार्टेज को यूज करने से मना कर दिया और एक रिवॉल्ट वहां पे एक ऑपोजिशन या तो एक झगड़ा शुरू हुआ था और मंगल पांडे सबसे पहले शहीद हो गए. सो मंगल पांडे के साथ ही विप्लव प्रीपोन पहले शुरू हो चुका था, पोस्टपोन पहले वो जो डिसाइड हुआ था उसके पहले वो शुरू हो गया. It disproved the planning and the objective of the revolt could not be the achieved. अब क्या हुआ? अब अंग्रेज को पता चल गया, अंग्रेजों को पता चल गया कि इंडियंस आर प्लानिंग फॉर रिवॉल्ट, एज इट वॉज डिसाइडेड कि 31 मई को करना है, बट मंगल पांडे ने विरोध करके मंगल पांडे मारे गए तो विप्लव पहले शुरू हो गया, जो डिसाइडेड डेट थी उसके पहले. सो ब्रिटिशर ये बात का पता लग गया. सो ब्रिटिशर ये हमारा जो 1857 का प्लान था वो पूरा बिगड़ गया. सो मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ द कार्ट्रिज ग्रीस विद द फैट ऑफ काव एंड पिग. एज अ रिजल्ट द रिवॉल्ट बिगिन अर्लियर than the fixed date and is disturbed the planning and the objective of the revolt could not be the achieved. Mangal Pandey was born to the Brahmin couple in Nagwa village of Uttar Pradesh. Now this all point you have to keep in mind. यूपी में नागवा विलेज, नागवा village you have to keep in mind. Uttar Pradesh, Nagwa village. He joined the British Army as a soldier at ₹7 as his salary. As we know, Indian soldiers को 7 रुपए मिलता था. British soldiers were getting 150 salary. So Mangal Pandey was a Brahmin. He born in Uttar Pradesh in Nagwa village. This you have to keep in mind. For IMP point you should keep in mind. So Mangal Pandey, he was a Brahmin, he born in the Uttar Pradesh in the Nagwa village, he was the British soldier and he was getting 7 rupee as his salary. The Indian soldier who had agreed to revolt want to wait till 31st May, whereas 26-year-old Mangal Pandey could not wait till then. डेट क्या डिसाइड हुई थी रिवॉल्ट की? 31 में. सो द इंडियन सोल्जर जो रिवॉल्ट में पार्ट करने वाले थे, दे नोज अबाउट द 31 मे एंड दे डिसाइड टू वेट टिल 31 मे. बट मंगल पांडे ने जल्दी कर दी, उन्होंने वेट नहीं किया. एंड he refused to follow the order of using the Enfield rifle and challenged the British officer Sergeant Major Hossain ordered to arrest him, but Mangal Pandey shoot him. अब सबने ये डिसाइड किया था 31 मई को रिवॉल्ट शुरू करेंगे. इसके पहले अब हमें पता है एनफील्ड राइफल कब आ गई थी? जनवरी 1857. रिवॉल्ट कब करना था? मई में. तो मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल का यूज करने के लिए मना कर दिया, दैट ही विल नॉट गोइंग टू बटन अप बाय ही विल नॉट यूज द राइफल एंड द कार्ट्रिज. तो सार्जेंट जो था इंग्लिश ऑफिसर हॉसन, उसने उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया एंड मंगल पांडे शूट हिम. मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया. इंडियन सोल्जर डिसाइड कि वी विल वेट टिल द 31 May, बट मंगल पांडे रिफ्यूज एंड ही किल्ड the British officer. So Major Hossain ordered to arrest him, but Mangal Pandey shoot him. मंगल पांडे ने क्या किया? उनको
मार दिया. ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर टू. 2 ब्रिटिश ऑफिसरों को मंगल पांडे ने मार दिया. द इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे. अब जैसे ही मंगल पांडे ने दोनों ऑफिसर को मारा तो ब्रिटिश जो ऑफिसर दूसरे थे उन्होंने इंडियन सोल्जर को बोला कि यू जस्ट अरेस्ट द मंगल पांडे. एंड अवर इंडियन सोल्जर रिफ्यूज, दे डिनाइड टू अरेस्ट द मंगल पांडे. The Indian soldier refused to arrest the Mangal Pandey. Being a Brahmin, when he was compared by the British soldier, he shoot himself by his own rifle. Ab, as Mangal Pandey was a Brahmin, okay, we learn now that he born in the Brahmin family in Uttar Pradesh in Nagwa village. So other soldiers refused, they denied to arrest the Mangal Pandey as Mangal Pandey was a Brahmin. जैसे हिंदू संस्कृति के अंदर ब्रह्म हत्या का महापाप माना जाता है, तो हमारे सैनिकों ने मंगल पांडे को पकड़ने और मारने से मना कर दिया. सो अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी होती है दैट मंगल पांडे कमिट एंड ब्रिंग द ब्राह्मण. सो व्हेन ही वाज कॉर्नर्ड बाय द ब्रिटिश सोल्जर, ही शूट हिमसेल्फ बाय हिज ओन राइफल. अब जो ब्रिटिश सोल्जर थे उन्होंने मंगल पांडे को घेर लिया पकड़ने के लिए. सो मंगल पांडे कमिट अ सुसाइड. सो इन दैट वे वी कैन कंसिडर द मंगल पांडे एज द फर्स्ट शहीद ऑफ दिस रिवॉल्ट. So when he was cornered by the British soldier, he shot himself by his own rifle. A bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because the British wanted to got information about the plan of the revolt from him. ये बहुत जल्दी में हो गया. डेट वॉज डिसाइडेड एट 31 में. मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर को पहले मार दिया. When he was cornered, जब अंग्रेज उनको पकड़ने आए तो ही ट्राई टू कमिट द सुसाइड. सॉरी, जब उनको बहुत खून निकल रहा था उनको हॉस्पिटल ले जाया गया. द प्लान, ब्रिटिशर चाहते थे कि उनसे कुछ इंफॉर्मेशन रिवॉल्ट के बारे में मिल जाए. सो द मिलिट्री कॉल्ड pretend to run a case against the Mangal Pandey on 6th April. They pretend, उन्होंने नाटक किया मंगल पांडे को उसके ऊपर केस चलाने का. that was just pretend, नाटक किया. So the military court pretend to run a case against the Mangal Pandey on 6th April 1857. The entire proceeding was in English. He was sentenced to the death at the end, but he did not divulge an information regarding the revolt to the British. That is how our patriots were. He was hanged at 5:30 a.m. on 8th of April, and that how become the first martyr of the revolt. Now, when Mangal Pandey tried to kill himself, उन्होंने खुद को गोली तो मारी पर उनको हॉस्पिटल लेके जाके बचा दिया गया ब्रिटिशरों ने. Now they pretend, क्या प्रिटेंड किया? They pretend, the military court pretend to run a case. मंगल पांडे बच गए, हॉस्पिटल में थे, बच गए और उनके ऊपर केस चालू किया गया और उनको फांसी की सजा दी गई. सो मंगल पांडे ऑन 6 अप्रैल 1857, 6 तारीख पर उनके पर केस शुरू हुआ और 8 तारीख को 2 दिन में उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया. सो द मिलिट्री कोर्ट प्रिटेंड टू रन अ केस अगेंस्ट द मंगल पांडे ऑन 6 अप्रैल 1857 एंड द एंटायर प्रोसीजर वॉज इन इंग्लिश. सी, ये भी एक गलत बात थी. एज वी वर द इंडियन, वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश, बट पूरा केस इंग्लिश में चलाया गया अंग्रेजों ने मंगल पांडे के खिलाफ. ही वॉज सेंटेंस टू द डेथ, उनको फांसी की सजा दी गई. एंड द एंड, बट ही डिड नॉट डेवलप एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिवॉल्ट टू द ब्रिटिश. ब्रिटिशरों ने बहुत कोशिश की साम दाम दंड भेद से कि मंगल पांडे से रिवॉल्ट की इंफॉर्मेशन मिले, बट ही डिडंट गिव एनी सिंगल इंफॉर्मेशन टू द ब्रिटिशर. एंड दैट इज हाउ आवर पैट्रियट्स वर. ही वॉज हैंग्ड, उनको फांसी दी गई 2 दिन के अंदर at 5:30 a.m. on 8th of April. That is how he became the first martyr. अब आपको ये डेट याद रखनी है, 8th अप्रैल 1857. सी, ये कब हो गया सब? 8 अप्रैल को. रिवॉल्ट शुरू कब करना था? 31 मई को. मतलब जो डिसाइड किया था वो प्लान पूरा फेल हो गया था, क्योंकि सबसे पहले मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिशर अफसर को मार दिया.
रिवॉल्ट पहले शुरू हो गया और अंग्रेज को पता चल गया, अंग्रेजों को, कि भारतीय लोग कोई रिवॉल्ट करने वाले थे, तो पूरा प्लान हमारा खराब हो गया। फिर से मंगल पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एक बार वापस उसको देख लेते हैं। इट वॉज प्लान टू बिंग द रिवॉल्ट अक्रॉस द नेशन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 मई 1857। आपको याद रखना है 31 मई 1857 वॉज अ प्लान डेट। लीडर लाइक नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह एंड द नवाब ऑफ अवध has joined hands with the तात्या टोपे। तात्या टोपे मिलिट्री ऑफिसर थे, एन एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर, एंड रंगो बापूजी एन अकम्प्लिश प्लानर। रंगो बापूजी का प्लान था, कमांडर थे तात्या टोपे, एंड अजीमुल्ला खान द लॉयर एंड द जर्नलिस्ट टू लीड द रिवॉल्ट। लीड कौन करने वाले थे? तात्या टोपे, रंगोजी बापू वॉज द प्लानर एंड द अजीमुल्ला खान वॉज द लीडर. So an accomplished planner and Azimullah Khan, the lawyer and the journalist to lead the revolt. Lotus and roti was the symbol to join the revolt. ये दोनों ही fill in the blanks में भी आपको याद रखना पड़ेगा. Lotus for the civilian and roti for the soldier. So lotus and roti was the symbol to join the revolt for the civilians and the soldiers respectively. The symbol were circulated across the nation. Bards, Hindu, Muslim priest, Aulia and the messengers played their part in the spreading the word about the revolt. पूरे देश में किन्होंने समाचार दिया था? बार्ड, फिर हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट, जो लोक गायक थे, जिसको हम चारण और सब कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम के गाते नाचते हैं, उन लोगों ने भी ये मैसेज स्प्रेड किए थे. मंगल पांडे क्यों हम स्पेशली पढ़ रहे? एज ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर, पहला शहीद माना जाता है भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के. सो मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ द कार्ट्रिज ग्रीस विद द फैट एंड काउ. एज अ रिजल्ट द रिवॉल्ट बिगेन अर्लियर देन द फिक्स्ड डेट. सबसे पहले मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल वॉज द इमीडिएट रीजन. उसकी कार्ट्रिज थी जो that was greased in the cow and pig fat. So Mangal Pandey was the British soldier. Mangal Pandey थे हिंदू, ब्रिटिश सेना में काम करते थे, and refused the use of the cartridge. So it was started earlier. So Mangal Pandey opposed the use of the cartridge greased with the fat of the cow and pig. As a result, the revolt began earlier than the fixed date. It's disputed the planning and the objective of the revolt could not be achieved. और इसी वजह से, क्योंकि विप्लव पहले शुरू हो गया, जो डेट थी रिवॉल्ट की उसके पहले रिवॉल्ट हैज स्टार्टेड, सो इट वाज लाइक फेल्ड. Mangal Pandey, the few dates what we will keep in mind. Mangal Pandey born in Nagwa village in Uttar Pradesh. So Mangal Pandey was born to the Brahmin couple in Nagwa village of Uttar Pradesh. He joined the British Army as a soldier at ₹7 as his salary. 7 रुपए की सैलरी थी उनकी. The Indian soldier who had agreed to revolt wanted to wait till 31st May. The soldiers who decide to join the revolt, they decide that they will wait till the 31st May, but Mangal Pandey denied. But Mangal Pandey could not wait till then. He refused to follow the order of using the Enfield rifle and challenged the British officer. British officer Sergeant Major Hawson ordered to arrest him, but Mangal Pandey shoot him. Mangal Pandey ने Sergeant Hawson को मार दिया. He defeated another British officer too. So the Indian soldier refused to arrest Mangal Pandey, being the Brahmin. अंग्रेजों ने मंगल पांडे का मारने का ऑर्डर दिया, but Indian soldier denied as he was a Brahmin. So when he was cornered by the British soldier, he shoot himself. उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की. But bleeding, the Mangal Pandey was taken to the hospital because the British wanted to gather information about the plan of the revolt from him. जैसे उन्होंने खुद को गोली मारी, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, as Britisher wanted information about the revolt.
So the military court pretend to run a case. Now they pretend, that was just mere एक pretend था against the Mangal Pandey on 6th April 1857. 6 तारीख को they start the case. 6th April they start the case against the Mangal Pandey, and 8th April he was hanged. So the military court pretend to run a case against the Mangal Pandey on 6th April 1857, and the entire proceeding was in English. He was sentenced to the death at the end, but he did not divulge any information regarding the revolt to the British. उन्होंने कोई माहिती, कोई भी बात रिवोल्ट के बारे में नहीं बताई. That is how our patriots were. हमारे शहीद जितने भी थे सभी ऐसी ही देशभक्ति वाले थे. So he was hanged at 5:30 a.m. सुबह के 5:30 बजे 8 तारीख को, 2 दिन के अंदर मंगल पांडे को फांसी दी गई. 6 तारीख को केस चालू हुआ और 8 तारीख को उनको फांसी पे लटका दिया गया. एंड दैट इज हाउ ही बिकम द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. नाउ सी spread of the revolt and its leader. So we have to talk about the few leaders who joined. सबसे पहले मंगल पांडे की वजह से रिवॉल्ट जल्दी शुरू हो गया, बट स्टिल नंबर ऑफ लीडर्स हु ट्राई के रिवॉल्ट कामयाब रहे, दो इट वाज फेल्ड एट द लास्ट, बट नंबर ऑफ लीडर हु पार्टिसिपेट इन दिस रिवॉल्ट, लेट्स टॉक ऑन इट. सो स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट एंड इट्स लीडर. सो कहां पे ये रिवॉल्ट हुआ और कौन उनके लीडर थे. सो फर्स्ट दिल्ली एंड द बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल जिसको हम कह सकते हैं. सो द सोल्जर रीच द दिल्ली फ्रॉम द मेरठ इन द मॉर्निंग ऑफ 11th May. अब तारीख क्या नक्की हुई थी 31, बट मंगल पांडे की वजह से 8 तारीख से अप्रैल में वो शुरू हो गया था. डेट क्या थी मई की. सो जल्दी जो शुरू हो गया तो मेरठ से, इट इज इन द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से द सोल्जर रीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लोग इकट्ठा होने लगे दिल्ली में. सो द सोल्जर रीच दिल्ली फ्रॉम द मेरठ इन द मॉर्निंग ऑन 11th May. They couldn't capture Delhi with the help of the Indian soldier present there. वो दिल्ली को जीत नहीं पाए जहां पे लोग थे ब्रिटिशर. They convinced the 80-year-old Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of the revolt. अब हमारे जो रिवॉल्ट के लोग थे उन्होंने बहादुर शाह जफर के जो लास्ट मुगल था, सी मुगल एम्पायर स्टार्ट विद द बाबर एंड एंड विद द बहादुर शाह जफर. 1857 का जब विप्लव शुरू हुआ था रिवॉल्ट, दैट बहादुर शाह जफर वॉज वेरी ओल्ड. He was a 80 nearly 80 year of old के एज के थे. सो हमारे लोगों ने बहादुर शाह को कन्विंस किया कि प्लीज बी द लीडर ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल. सो they could capture the Delhi with the help of the Indian soldier present there. They convinced the 80-year-old Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of the revolt, and this news infused a new life in the revolt, and many region of India joined the revolt. अब जैसे ही दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने ये फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के रिवॉल्ट में ज्वाइंट होने के लिए हाँ बोला, व्हेन ही कन्विंस, सो लोगों के अंदर भी एक शक्ति आई, मेंटली स्ट्रेंथ हुए, और दे अग्री, other rulers also agreed to took part in the 1857 revolt. See, उस वक्त भी मुगल लास्ट मुगल थे, 80 साल के थे, दिल्ली कंट्री कैपिटल. सो उसका इम्पैक्ट ये हुआ जब बहादुर शाह जफर ने हाँ बोला तो दूसरे राजा, दूसरे लीडर, लैंडलॉर्ड्स थे, उन लोगों को भी एक हिम्मत बनी 1857 के विप्लव में पार्ट लेने की. देन कानपुर एंड नाना साहेब. सो कानपुर broke into the revolt on 4th June 1857 and Nana Sahib Peshwa was asked to assume the leadership of the revolt. कानपुर से कौन लीडर बने? नाना साहेब पेशवा. So 4th June 1857 याद रखना है. So कानपुर broke into the revolt on 4th June
1857, and Nana Sahib Peshwa was asked to assume the leadership of the revolt. However, they had to surrender to the British following an acute shortage of food and water due to the 22-day long siege. अब उसमें ये हुआ स्टूडेंट्स कि नाना साहेब पेशवा और जितने भी लीडर थे, तो कानपुर में से भी अच्छी एक फाइट हुई थी ब्रिटिशर के अगेंस्ट, बट दे हैव टू सरेंडर. उनको ये विप्लव छोड़ना पड़ा एज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर. So Nana Sahib and Kanpur you have to keep in mind. So Kanpur broke in the revolt on the 4th June. Date आपको याद रखनी है. And Nana Sahib Peshwa was asked to assume the leadership. Nana Sahib Peshwa was a leader from the Kanpur, and they had to surrender. They have to surrender. Why? They had to surrender to the Britisher following an acute shortage. क्योंकि वहाँ पे खाना और पीने के पानी की शॉर्टेज हो गई. सो ज्यादा दिन तक इंडियन सोल्जर लड़ नहीं पाए एंड दे हैव टू सरेंडर. ओके, नाउ से वी विल टॉक फ्यू मोर पॉइंट ऑन द बिहार एंड द कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, brave army commander Tatya Tope, and the revolt of 1857 in Gujarat. Many more points still we have to discuss. So आज इतना ही हम रखते हैं. Let's write today's homework. See this all point, and see as we are studying the history, wherever you are having the dates, day आ रहे उसको आपको याद रखना पड़ेगा. होमवर्क में भी आप लिख लेना इसको. It is very important to learn and to understand and to remember as well. Now important point for exam purpose also. Write a short note on Mangal Pandey. Important. Write a short note on Mangal Pandey and another point please. Dali and Bahadur Shah Zafar. Delhi and Bahadur see, this is the two question for the homework. Number one, write a short note on Mangal Pandey as we consider him as the first martyr of the freedom struggle, and write a note on Delhi and Bahadur Shah Zafar as we are talking about the revolt of 1857. So these 2 points are very important. Homework, write a short note on Mangal Pandey, write a note on the Delhi and Bahadur Shah Zafar. As I said, in the next lecture we will continue the same chapter and we will going to talk about the Nana Sahib, then Kunwar Singh, Rani Lakshmibai, Tatya Tope, and a revolt of 1857 in Gujarat. As see, we need to understand how it's what was the गुजरात के अंदर क्या रीजन थे, हाउ इट्स आउटब्रेक हुआ, हाउ इट्स आउटब्रेक इन गुजरात, हाउ इट्स प्लांट इन गुजरात, एंड नंबर ऑफ points. So the point what we have discussed now clear to you all. In next lecture we will continue with the same chapter. Okay, so take care, goodbye and thank you.